Hello students, welcome back to my channel CKS Physics, Learn Physics with Imagination. So dear students, in previous class we already discussed about transistor characteristics, but transistor characteristics are notes provide kariya pai mu kahithili, but something due to some problems mu provide kari, but in this section first of all I transistor characteristics ro notes विषय discussion करिया जे कौन कौन how can we write notes of transistor characteristics then हमें provide करिया आगु को proceed करिया. Okay, so here is transistor characteristics and हमें previous class में पढ़िथिले transistor characteristics रो तीनटा characteristics थाए कौन गोटे होची input as well as output and another is transfer characteristics. Okay, and here is input characteristics, this is output characteristics, and here is transfer characteristics, and here is transfer characteristics. Okay, so there is three characteristics of transistor. तीनटा को transistor CB, CC and CE पाई common emitter, common base and common collector पाई transistor characteristics तीनटा रहुची. गोटे input transistor characteristics as well as output characteristics and finally transfer characteristics. So को way रे तमे notes लिखिबो बस मु केवल common base case 1 for common base notes कहि दोची according to this follow करके तमे common emitter and common collector notes निजे लिखि पारिबो. Okay, so here input characteristics रे हमें जानिथिले जे input it is just a graph in between input voltage and input current. कॉमन बेस रो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट फाइंड आउट करिबा हम ऑलरेडी फाइंड आउट करके तीनटा टेबल करथले सीबी सीसी एंड ता तीन जन कर इनपुट आउटपुट करंट इनपुट आउटपुट वोल्टेज इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस आर गेन बी गेन पी गेन आई गेन सो वर्क करथले. ओके, सो दैट तमे इनपुट और आउटपुट करंट वोल्टेज इनपुट करंट भीतर जदी हमें कॉमन बेस रो गोटे ग्राफ प्लॉट करूचे दैट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. So how can you write the input characteristics of a transistor in common base operation? Input characteristics of a transistor in common base operation is a graph between emitter current and emitter base voltage. First point. Then graph plot करियो. Graph plot कला पर लिखिबो here Ri equal to del EB divided by del I. where VCB constant output voltage constant. अरे हमें इनपुट रो रिलेशन बार करछ आउटपुट कांस्टेंट रो ऑलरेडी हम पढ़ी सारिछे ए टाइप रो लिखि परिबो. देन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन सेम वे रे ए डेफिनेशन लिखि परिबो. ये आउटपुट इनपुट जगह लिखिबो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस ऑपरेशन इज अ ग्राफ बिटवीन को वोल्टेज ना कलेक्टर करंट एंड ए कलेक्टर बेस वोल्टेज. ठीक है लिखिबो collector current and collector base voltage, input voltage input current in output voltage output current. Similar way graph plot करो. ग्राफ पे हमें पढ़ी से नेचर ऑफ ग्राफ. अच्छा, देन आर वायर करिवो आर माने आउटपुट रेजिस्टेंस del CB divided by IC del IC where VEB और IE कांस्टेंट. आउटपुट रिलेशन वर्क करू इनपुट करंट और इनपुट पोटेंशियल का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा. गला Then transfer characteristics. Similar way transfer characteristics रो points भी लिखि पाइबो. फर्स्ट पॉइंट कोन लिखिबो transfer characteristics of a transistor in common base operation is a graph between emitter current and collector current. Output current input current is a graph between emitter current bracket IE and output current IC. So graph लिखि दलो. next point लिखि दबो. next point लिखि परिबो the nature of graph is straight line passes through the origin. Next point लिख परिबो the nature of graph is a point पर लिखिबो एटा the nature of graph is a straight line passes through the origin. Okay, so that we get here I gain equal to IC by IE. I gain मान करना. And here alpha equal to कितना भाई I gain मान alpha equal to IC by IE. अरे यार अरे जदी गोटे स्ट्रेट लाइन passes through the origin रहला that means ये कौन इंडिकेट करछ IC directly proportional to IE होंगे नहीं. एटा लिखिबो नहीं जस्ट बुझिया पे कहि दोची देखो IC directly proportional to IE
जदि हमें आईसी लिखिबा आ प्रोपोर्शनल उठे गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सपोज एटा अल्फा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा इनटू आईई ताले अल्फा कोन हो आईसी डिवाइडेड बाय आईई इक्वल टू अल्फा बनावनी जोटा कि हमें करंट गेन बोली कहउछे हियर अल्फा इक्वल टू आईसी बाय ई ऑलरेडी अल्फा में भाग कर साचे आई गेन इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट हम जदी ये ग्राफ को नै जदी पैरेलल ग्राफ को नै जदी हम नेचर ऑफ ग्राफ को बात करबा ए रिलेशन को बात करबा सेम कांसेप्ट भी बाहरी पाइबो ओके सो सिमिलर वे रे तमे केस 2 फॉर कॉमन एमिटर पाई करि परिबो एमिटर रो तमे चेक करियो कोडा इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ग्राफ सेम रहबो चाहो जो बुक रे भी हेल्प नै करो न अदरवाइज सेम ग्राफ रखि दो किछ प्रॉब्लम होबो नै ग्राफ सेम रहबो देन नाकू इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट आउटपुट करंट पाई आउटपुट रो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट करिबो ट्रांसफर पाई आउटपुट करंट इनपुट करंट नै करिबो खाली चेंज होबो एरा जहां पे जहां थिबो कॉमन बेस में जहाँ आम कले कॉमन एमिटर जहाँ पुट कर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर जहाँ पुट कर पुट करके तीन टाकर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें करि पारिबो ओके।